चैप्टर नंबर 9 है इंडस्ट्री. ठीक है. So sector-wide explanation. In the previous lecture we covered agriculture and services. Now another important sector of economy will be industry, and one more sector we can say in terms of external sector. वहाँ तक जो चैप्टर हो गए वो रेलिवेंट हो गए. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी सम स्मॉल चैप्टर्स लाइक क्लाइमेट चेंज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो ऑन. तो जो मेजर चैप्टर है बेसिकली वो पहले अंडरस्टैंड करेंगे बिकॉज दिस टॉपिक चैप्टर विल बी important from the question point of view, also descriptive question के लिए भी है. Like industrial performance, if you have to evaluate for the Indian economy in the last decade, so how we can evaluate the industrial performance, then what initiative have been taken by the government to boost industrial performance. So if you have to highlight those industrial policies, the recent industrial policy and the measures taken by government to promote the industrial policy, then this chapter will basically have to answer that question. So one important point is that we must always know the growth record. So we have already written it: agriculture growth, industry growth, service growth, and the GDP growth for the last few years. The second point will be what is the share of industry in the overall GDP. Then government policy towards promoting industry. Then the policy related to the FDI in the industry. So few important things जो इस सर्वे के अंदर हाईलाइट हो रहे हैं उस चैप्टर के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो कुछ मेजर पॉइंट्स बेसिकली यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस में. एंड इट इज़ बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल शेयर फर्स्ट ऑफ ऑल. तो जैसे एक आइडिया रखना है, इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस, द शेयर इन टर्म्स ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर द ईयर 2023 इज 30%. जीडीपी का कंपोजिशन है. तो हाउ मच इज द शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन द ओवरऑल ग्रॉस वैल्यू एडेड, दैट इज जीडीपी. सो द शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन जीडीपी इज 30%. उसके सब कंपोनेंट अगर आप एक्सप्लेन करो लाइक माइनिंग और क्वेरिंग के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, तो एक रफ आइडिया रखेंगे. इट इज 2.3, 17.3, 2.3 एंड 8.1. बट मेजर इंफॉर्मेशन विल बी व्हाट इज द शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन द ओवरऑल जीडीपी. और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन रखिएगा ग्रोथ रिकॉर्ड के लिए. सो ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ द रियल टर्म ग्रोथ इज 6.7 फॉर द ईयर 2022. बट 2023 का ग्रोथ ओवर 2020 अगर कंपेयर करते हैं, मतलब कोविड वाले ईयर से, मतलब डेटा को थोड़ा केयरफुली पढ़ना कि जब आप नॉर्मली व्हेन वी एक्सप्लेन द ग्रोथ रेट, वी एक्सप्लेन द ग्रोथ रेट ऑफ 23 विथ रिस्पेक्ट टू 22, 22 विथ रिस्पेक्ट टू 21. तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन जो गिवन है ये 2023 का ग्रोथ है ओवर 2020. तो आपके लिए ये करंट इंफॉर्मेशन होगा 6.7. तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो रिकॉर्ड है वो ग्रोथ. नाउ चैप्टर के अंदर बेसिकली इसने एनालाइज कर रखा है कि जो इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस है, व्हाई इट इज प्रोमिनेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी, विच अकाउंट फॉर 31% ऑफ द जीडीपी ऑन एवरेज. अब यहाँ बोलोगे यहाँ लिखा है 30%, वहाँ लिख रहे हैं 31%, बट दैट 31% इज ऑन एवरेज ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 12 टू फाइनेंशियल ईयर 21. मतलब उस पीरियड के लिए बेसिकली एक्सप्लेन किया जा रहा है. एंड एम्प्लॉइंग ओवर 12.1 करोड़ पीपल, द सेक्टर रेलिवेंस कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू वेरियस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लिंकेजेस विद अदर सेक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द एम्प्लॉयमेंट. और फिर उसने 3 पॉइंट बेसिकली एक्सप्लेन करा कि व्हाई दिस सेक्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट, व्हाई इंडस्ट्रियल सेक्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रियल, मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी. और जो 3 पॉइंट है उसमें ये कह रहा है इट इंश्योर्स द डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैन अकोमोडेट डोमेस्टिक डिमांड एंड रिड्यूसेस द रिलायंस ऑन द इम्पोर्ट. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा, हाउ इट विल इंश्योर डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैन अकोमोडेट डोमेस्टिक डिमांड. तो दैट मीन्स जो इकोनॉमी का डोमेस्टिक डिमांड है उसको हम कैसे डोमेस्टिक प्रोडक्शन से फुलफिल करेंगे. और अगर वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन से फुलफिल हो रहा है तो हमारा जो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगा. सो इट विल रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज मल्टीप्लायर इफेक्ट विच ट्रांसलेट इनटू एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ. सो मल्टीप्लायर इफेक्ट मीन्स
Industrial growth, that means you are setting up some industry, it will have a magnified effect for the economy. So if there will be an industrial growth, it will have a larger impact for the economy as compared to same amount of growth in the other sector. So it has a greater multiplier effect for the economy and therefore it is vital for employment generation. तो वो पॉइंट आपको पहले से मालूम है कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इंडस्ट्री की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सर्विस सेक्टर. और थर्ड पॉइंट कह रहा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रमोट्स ग्रोथ in service sectors such as banking, insurance and logistics. That means if there will be a fast industrial growth, then there will be a fast growth in the banking because banking sector is giving credit. तो अगर industry expand होगी तो banking credit भी expand होगा. It will be promoting insurance and it will also be promoting the logistic, that means in terms of the transportation. So industry is important for the Indian economy because of these reasons you can say. तो ये 3 पॉइंट जो सर्वे के अकॉर्डिंग दिए उसको आप एक जगह पहले एक जगह कंपाइल कर लीजिए. फर्स्ट पैराग्राफ, इंडस्ट्री होल्ड्स अ प्रोमिनेंट पोजीशन. इंडस्ट्री होल्ड्स अ प्रोमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी. इंडस्ट्री होल्ड्स अ प्रोमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी. In the Indian economy, accounting for 30% of gross value added, accounting for 30% of gross value added in financial year 23. In financial year 23. In financial year 23. And during financial year 2012 to 2021 and during financial year 2012 to financial year 2021 its share was on average 31%. And employing over 12 crore people. Employing over 12 crore people. The importance of industrial sector. Importance of industrial sector can be identified. Importance of industrial sector can be identified through various direct and indirect linkages. With other sectors. Contributing to economic growth and employment. तो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंकेजेस है उसको पॉइंट वाइज कर लीजिएगा. अब अपने नोटबुक में आप उसको पॉइंट वाइज लिखेंगे जो यहाँ पे मार्क है. फर्स्ट, it ensures that domestic production can accommodate. Domestic production can accommodate domestic demand and reduces the dependency on import. Domestic production can accommodate domestic demand and reduces the dependency on import. Second, industrial growth has
multiplier effect. Industrial growth has multiplier effect. Industrial growth has multiplier effect, which translates into employment growth, which translates into employment growth, which translates into employment growth. ठीक है, और कुछ सेक्टर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्क्ड है दैट some industries like textile, construction have high employment elasticity. So if you have to give some example, that means for revival of the employment, it is better to have high growth in the textile and high growth in the construction sector because they have a high employment elasticity. Third, industrial growth promotes growth in service sector, such as banking, insurance, logistic, etc. Banking, insurance, logistic, etc. तो 3 पॉइंट बेसिकली एक्सप्लेन किया जा रहा है. 1, with more industrial production your dependency on import will be less and it can satisfy more of domestic demand. Second, it has a greater multiplier effect. And third, it supports industry as well. Also that means some linkage between industrial growth and the service sector growth. Greater growth in the industry will also promote more growth in the service sector, particularly in the banking, insurance and the logistic part. Next paragraph. In financial year 23, the industry sector witnessed modest growth of 4.1%. Industry sector witnessed modest growth of 4.1% compared to strong growth of 10.3%. In financial year 22. So there was a high growth of 10.3% in 22. As compared to that, we have a 4.1% growth in the current year 2023. But reason is obvious. 22 के लिए जो बेस पीरियड हो गया वो 21 हो गया. उस 21 में बेसिकली डिक्लाइन था, तो देयर वाज अ लोअर बेस. सो बिकॉज ऑफ दैट लोअर बेस द ग्रोथ रेट अपीयर्स हायर. बट उसके बाद जब एक बार स्टेबल हो गया तो उसके बाद का ग्रोथ फिर 4.1 है. This is likely on account of input cost push pressure. This is likely on account of input cost push pressure. Like petroleum price का increase होना, comma supply chain disruption and China lockdown. Supply chain disruption and China lockdown impacting the availability of essential inputs. And slowing the global economy. Slowing of global economy. ठीक है, तो उसने एक्चुअल में रीजन बता रखा है जो लोअर ग्रोथ है उसके पीछे.
high input cost push pressure, supply chain disruption and the China lockdown impacting the availability of the essential inputs. अब जो पॉइंट बेसिकली यहाँ पे आपने 3 मार्क कर रखा है, जो इंपॉर्टेंस है, उस पॉइंट को वो फर्दर सर्वे इसको एलैबोरेट कर रहा है. तो फर्स्ट पॉइंट वाज बेसिकली व्हाट, दैट इट विल इंश्योर डोमेस्टिक प्रोडक्शन can accommodate domestic demand and reduce the dependency on the import. So that point has been explained. Demand stimulus to in industrial growth. एक सब हेडिंग बना सकते हो, डिमांड स्टिमुलस टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ. डिमांड स्टिमुलस टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ. The financial year 23 began with Russian-Ukraine conflict. But as the year ends, the conflict appears to have subsided. Although global commodity prices are still higher. Therefore, industry has faced high input cost. Imported into the country. So fearing demand impact, the industry has been gradually passing on. Higher production cost, which have led to higher production cost, which are led to a rise in inflation. So the recent inflation is basically an outcome of one factor is basically what? The high commodity prices due to that international conflict. Other reason for high inflation in the recent period is due to the release of the pent up demand. So earlier the demand was basically subsidious because we prefer to defer our spending, but as the COVID-19 pandemic subsided, जो pent up demand था वो अब release हो रहा है. तो release होने का मतलब कि now there will be greater demand for the commodities, and because of that also the core inflation is rising. So one factor was cost push, other is also the demand pull. So demand is pulling the price upward, cost is also pushing the price upward. So both factors are operating out. Right down. Another reason for rising prices is a release of pent up demand in the post pandemic period.
In addition, there is strong external demand. There is strong external demand. There is strong external demand, and because of that, manufacturing exports increases. Strong external demand. Because of that, manufacturing exports increases. As supply chain bottleneck, as supply chain bottleneck or supply chain disruption, as supply chain disruption has eased, as supply chain disruption has eased, there has been a recovery in trade also. There has been recovery in trade also. There has been recovery in trade also. ठीक है, वो पॉइंट आप मेनली एक्सटर्नल सेक्टर वाले चैप्टर के अंदर ज़्यादा एक्सप्लेन होगा कि जो रिकवरी है बेसिकली वो ट्रेड के अंदर, मतलब अर्लियर प्री पैंडेमिक पीरियड में वी ऑल्सो विटनेस अ पीरियड ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस, बट सरप्लस वाज मेनली बिकॉज ऑफ लोअर इनपुट डिमांड. जो इंपोर्ट है वो लोअर थे. एंड वाई इम्पोर्ट डिमांड वाज लोअर, और वाई इम्पोर्ट डिमांड वाज लोअर? इम्पोर्ट डिमांड वाज लोअर बिकॉज इकोनॉमी के अंदर ऑलरेडी एक स्लो डाउन था. तो अगर इकोनॉमी में ऑलरेडी स्लो डाउन है तो हमें कैपिटल गुड्स की डिमांड कम करेंगे बाहर से. तो इम्पोर्ट वाज बेसिकली स्लोइंग डाउन बिकॉज ऑफ द स्लोइंग डाउन ऑफ द इकोनॉमी. सो एज अ रिजल्ट देयर वाज capital account surplus for a brief period. After COVID pandemic, what has happened? Economy is now recovering. So as economy will recover, there will be more and more demand for capital goods also, capital import also. So the demand for import has increased. Plus जो import prices हैं, input prices हैं, वो भी क्या हो गए? Increase हो गए. So as a result, now we have a current account deficit. But जो हमारा net export as a percentage of GDP है वो इम्प्रूव हो रहा है. नेट एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. तो नेट एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, दैट मीन्स नाउ वी आर ट्रेडिंग मोर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज. वो एक्सपोर्ट में भी होगा और इम्पोर्ट में भी है. सो देयर इज अ फास्टर ग्रोथ इन दी इम्पोर्ट नाउ एज कंपेयर टू दी एक्सपोर्ट. तो ये पॉइंट बेसिकली एक्सटर्नल सेक्टर वाले पार्ट में लिख देंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में करना. An increase in investment demand, an increase in investment demand has emerged. An increase in investment demand has emerged. An increase in investment demand has emerged as another powerful stimulus to industrial growth. An increase in investment demand has emerged as another powerful stimulus to industrial growth. Another powerful stimulus to industrial growth. It has been triggered by a jump in capital expenditure, capex. It has been triggered by a jump in capital expenditure of central government. Capital expenditure of central government. Capital expenditure of central government. तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे बजट में इंफॉर्मेशन है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करंट ईयर का लास्ट ईयर के कंपेयर में ऑलमोस्ट 64% का ग्रोथ है. तो ओवर लास्ट 3-4 ईयर इट हैज डबल्ड. इन द सेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर लेते हैं तो इट वाज अराउंड 1.5-1.8 एंड नाउ इट इज इन एक्सेस ऑफ अराउंड 3.4. सो दैट increase in the capital expenditure is basically, capital expenditure is mainly on what? Social overhead capital, and that is helping more industries. So they are the beneficiaries of that capital expenditure. So the industrial recovery or industrial demand, increase in demand, is also because of the higher capital expenditure by the central government. अब ये टेबल इसको आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इसको इग्नोर दैट.
Make this heading. Supply response of industry. Supply response of industry. The supply response of industry to demand stimulus. The supply response of industry to the demand stimulus. To the demand stimulus has been robust. Has been robust. As reflected in high frequency indicators. High frequency indicator. The PMI manufacturing, that is Purchaser Managers Index, the PMI manufacturing has remained in the expansionary zone. The PMI manufacturing has remained in the expansionary zone since July 2021. Since July 2021. The sustained growth of manufacturing output. Sustained growth in manufacturing output. Sustained growth in manufacturing output is also seen within the overall IIP, Index of Industrial Production, IIP, producing consumer durables, in sync or in accordance with, pent up consumer demand. In sync with pent up consumer demand. The robust growth in the production of capital good. The robust growth in the production of capital good and infrastructure. Robust growth in the production of capital good and infrastructure is indicative of beginning of investment cycle in the next financial year. इनमें जो कैपिटल गुड्स है वो एक्चुअली में मशीनरी है. तो इफ देयर इज ग्रोथ इन द कैपिटल गुड इंडस्ट्री टुडे, इट इज अ ग्रोथ हार्बिंगर. वो इंडिकेट करता है कि फ्यूचर का ग्रोथ, बिकॉज वाई वी नीड कैपिटल गुड्स टुडे, वी नीड मोर कैपिटल गुड्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस more of output in the future. So it is indicating that in future there will be a growth, a revival. So current growth, high growth of the capital goods industry is basically an indication of the fact that there will be more growth in the future. So for the next financial year it will be a reviving the investment cycle. ठीक है, ये स्पेसिफिकली इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है. जो 8 कोर इंडस्ट्रीज होते हैं जो ओवरऑल प्रोडक्शन के लिए, दैट इंक्लूड बेसिकली कोल, फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस. ये बेसिकली हमारा ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है. तो जैसे एमएसएमई भी उसके अंदर आ जाएगा, ओवरऑल जो कैपिटल गुड्स है वो भी इसके अंदर आ गया, जो रॉ मटेरियल है वो भी इसके अंदर आ जाता है. बट जो कोर 8 इंडस्ट्रीज हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज, दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ बेसिकली द ओवरऑल इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस ऑल्सो. दैट इंक्लूड्स बेसिकली ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन क्या रखेगा कि 8 कोर इंडस्ट्रीज में कोल, फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है.
and the growth of these industries has held steady, reflecting a broad momentum in the industrial activity. तो जो कोर 8 इंडस्ट्रीज है इनका जो ग्रोथ है वो इंडिकेशन होता है अबाउट द फ्यूचर ग्रोथ एज वेल, बिकॉज दीज आर बेसिकली इन विच फील्ड, व्हाई दे विल बी ग्रोथ इन द सीमेंट, कंस्ट्रक्शन के लिए, तो इट इज बेसिकली इंडिकेटिंग सम अदर फैक्टर ऑल्सो. ग्रोथ इन दी फॉर एग्जाम्पल कोल, तो coal is a source of energy, but why you need more of it? Because there will be more industrial activity. So it is basically an indicator. तो अगर हम इस कोर को इंडिकेट कर लेते हैं कि इस कोर में अगर ग्रोथ हो रहा है तो इसका मतलब जो अदर इंडिकेटर होंगे इट विल हैव अ ग्रेटर मल्टीप्लायर इफेक्ट लिखा है. तो इट इज बेसिकली एन इंडिकेशन ऑफ द फैक्ट दैट देयर विल बी ग्रोथ इन द अदर इंडस्ट्रीज एज वेल. यू कैन ऐड दिस पॉइंट आल्सो नेक्स्ट पैराग्राफ में. द 8 कोर इंडस्ट्रीज, the 8 core industries of coal, fertilizer, cement, steel, electricity, refinery product, crude oil and natural gas, crude oil and natural gas, crude oil and natural gas are critical in meeting the demand for input, are critical in meeting the demand for input across industries. So the growth in these industries has held steady. The growth in these industries has held steady, reflecting a broad momentum in industrial activity. ठीक है, अभी अलग अलग कंस्ट्रक्शन में उसका इम्पोर्टेंस नहीं, कैन इग्नोर दैट. दिस टाइप ऑफ टेबल आप सेफली इसको इग्नोर, इसमें कुछ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए नहीं होता. ठीक है, अलग अलग फूड प्रोडक्ट में कौन कौन से. नाउ यू कैन मेक हेडिंग ऑफ बैंक क्रेडिट टू इंडस्ट्री, दिस पार्ट ओनली. बैंक क्रेडिट टू इंडस्ट्री, बैंक क्रेडिट टू इंडस्ट्री. तो ऑब्वियसली व्हाट इज एक्सपेक्टेड, मतलब रिलेशन से क्लियर होना चाहिए. जैसे जैसे इकोनॉमी का ग्रोथ होता जाएगा, जो एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट बाय बैंक टू द इंडस्ट्री दैट विल आल्सो इंक्रीज, बिकॉज वो इनपुट है. in order to buy more of the product we must have the resource available. So increasing or extension of more credit to the industry is also an indicator of the fact that there is a recovery in the industrial sector. अगर क्रेडिट का ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है, दैट मीन्स फर्म्स आर नॉट टेकिंग मोर लोन फ्रॉम बैंक, दैट इंडिकेट व्हाट, in future the growth will slow down. So if there is an increase in the credit flow to the industry, that indicates industrial recovery, and in future there will be a faster growth, because those are the inputs here. So growth in bank credit has kept pace with industrial growth. Growth in bank credit has kept pace with industrial growth. So while a large share of bank credit continues to be assigned to large industries,
large industries. After comma, credit to MSME, credit to MSME has also seen a significant increase. Credit to MSME has also seen a significant increase. Also seen a significant increase. The robust growth in credit demand, the robust growth in credit demand combined with a rising capacity utilization, a rising capacity utilization, a rising capacity utilization and investment in manufacturing, a rising capacity utilization and investment in manufacturing underscores business optimism, underscores business optimism regarding future demand, business optimism regarding future demand, business optimism regarding future demand. ठीक है, now we come to this part of FDI. ये part आपके लिए important है. FDI policy reform to boost in investment. तो with respect to the industrial sector, heading actual में यहाँ से start हो रहा है. Resilient FDI flow in the manufacturing sector. आप अपने नोटबुक में से बनाना FDI in industry overall. FDI in the industry. बट उसके इंक्रीज का यहाँ पे रीजन बताया जा रहा है कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स. जो पॉलिसी करेक्शन है वो एक फैक्टर हो जाएगा. एंड व्हाट आर द अदर रीजंस फॉर द इंक्रीज्ड एफडीआई इनफ्लो इनटू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. बट वैसे ही रखिएगा, ओवरऑल जो एफडीआई आता है उसका ग्रेटर पार्ट कहाँ जाता है, सर्विस सेक्टर के अंदर जा रहा है. बट इंडस्ट्री के अंदर भी एफडीआई रिक्वायर्ड होता है बिकॉज इंडस्ट्री सेक्टर इज वेरी क्रिटिकल. एंड वाई इट इज क्रिटिकल वो आपने अपफ्रंट 3 पॉइंट लिखे. इट इज क्रिटिकल बिकॉज ऑफ दोज 3 रीजंस. So for that purpose we also require more and more FDI coming into the manufacturing as well. So annual FDI equity flow, annual FDI equity inflow, annual FDI equity inflow, annual FDI equity inflow in the manufacturing sector, in the manufacturing sector have been steadily increasing, have been steadily increasing, have been steadily increasing over the last few years, over the last few years. And it jumped from 12.1 billion in financial year 21, 12.1 billion in financial year 21, 12.1 billion US dollars, 12.1 billion US dollar in financial year 21 to 21.3 billion in financial year 22, in financial year 22. However, with the rise in global uncertainty, with the rise in global uncertainty, a rise in global uncertainty in the wake of Russia-Ukraine conflict, in the wake of Russia-Ukraine conflict, FDI equity inflow, FDI equity inflow
FDI equity inflow in the first half of financial year 23. In the first half of financial year 23 fell below, first half of financial 23 fell below its corresponding level in first half of financial year 23 fell below its corresponding level in first half of 2022. First half of 2022. तो 21 से 22 के बीच जो ग्रोथ है वो 12.1 टू 21.3 है, बट जो 23 का फाइनेंशियल ईयर है, 23 का फाइनेंशियल ईयर उसमें जो फर्स्ट हाफ है उसके अंदर जो कैपिटल का इन्फ्लो है, एफडीआई का इन्फ्लो है, वो एज कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 इज लेस बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल रीजन्स. एंड व्हाट इज द अदर रीजन? जो मॉनेटरी टाइटनिंग है यूरोपियन कंट्रीज में या यूएस में, उसकी वजह से रेट ऑफ रिटर्न, तो जब रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा तो कैपिटल हैज अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स दोज कंट्रीज विच ऑफर देम मोर रिटर्न. तो जो इनफ्लो इंडियन इकोनॉमी की तरफ या इमर्जिंग मार्केट की तरफ हो रहा था वो वापस यूरोपियन कंट्रीज और यूएस की तरफ हो गया. तो बिकॉज ऑफ दैट मॉनेटरी टाइटनिंग ऑल्सो यू कैन ऐड दैट पॉइंट. The monetary tightening at the global level, the monetary tightening at the global level, monetary tightening at the global level has further restricted FDI equity inflow. Monetary tightening at global level has further restricted FDI equity inflow. FDI equity inflow. FDI equity inflow. ठीक है, ये टेबल सेक्टर वाइज एफडीआई इक्विटी इनफ्लो को इंडिकेट कर रहा है. यूज वैसे नहीं है बट जस्ट इंफॉर्मेशन के रखेंगे दैट लार्जेस्ट कंपोनेंट सेक्टर वाइज ये डिवीजन है इन विच सेक्टर एफडीआई इज कमिंग मोर. So 34% is basically in drugs and pharmaceuticals, 22% in the service sector, then 18% is in trading. तो just few जो important है उसको आप नोट कर लेना, few important वही नोट साइड में नोट कर लिए. सेक्टर वाइज एलोकेशन है, सेक्टर वाइज डिवीजन है. ऑर्डर में लिख लेना, टॉप टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में. ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स 34%, सेकंड के लिए. अच्छा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ड्रग्स के लिए ये वाला वैल्यू होगा 4%. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर 34, देन 22% सर्विसेज, 18% ट्रेडिंग, 7% केमिकल्स या ऑटोमोबाइल, केमिकल्स. फर्दर ये कह रहा है कि ऑल्दो जो एफडीआई का इनफ्लो है वो फर्स्ट हाफ ऑफ 23 में डिक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू द 22, बट स्टिल इट इज हायर एज कंपेयर टू द प्री पैंडेमिक लेवल. प्री पैंडेमिक लेवल के कंपेरिजन में अभी भी हायर है, एंड इट इज हायर बिकॉज ऑफ सर्टेन रिफॉर्म्स ड्रिवन बाय स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एंड मेजर्स इंप्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेक इन इंडिया वन ऑफ द मोस्ट एफडीआई डेस्टिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव एफडीआई डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड. अब यहाँ पे आप बेसिकली जो एफडीआई पॉलिसी रिफॉर्म है वो स्पेसिफिकली मेंशन कर देना. इसमें ऑल टाइप ऑफ ट्रेडिंग, गुड्स की ट्रेडिंग है, कमोडिटीज ट्रेडिंग है, लॉजिस्टिक भी आ जाएगा, एक जगह से गुड्स को मूव कर रहे हैं वो भी ट्रेडिंग के फॉर्म में आ जाएगा, गुड्स का मूवमेंट है वो.
एफडीआई पॉलिसी रिफॉर्म, ये मेजर है आई थिंक इस चैप्टर के लिए। एफडीआई पॉलिसी रिफॉर्म टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट। And although FDI equity inflow, although FDI equity inflow, although FDI equity inflow has reduced in the first half of financial year 23, has reduced in the first half of financial year 23, after comma, it is above the pre-pandemic level. It is above the pre-pandemic level. It is above the pre-pandemic level. Driven by structural reform. Driven by structural reform and measures. Driven by structural reform and measures. Structural reform and measures improving the ease of doing business. Structural reform and measures improving the ease of doing business. Ease of doing business, comma, making India one of the most attractive, making India one of the most attractive, one of the most attractive FDI destination in world, one of the most attractive FDI destination in world. The government has implemented an investor friendly FDI policy. The government has implemented an investor friendly FDI policy. Government has implemented an investor friendly FDI policy under which FDI up to 100% is permitted. FDI up to 100% is permitted. FDI up to 100% is permitted through automatic route. Through automatic route in most sectors. In most sectors. Full stop. India continues to open up its sectors. India continues to open up its sectors. India continues to open up its sectors to global investors. To global investors by raising FDI limit. By raising FDI limit, underline that, by raising FDI limit, comma, removing regulatory barriers. Removing regulatory barriers, comma, developing infrastructure. Developing infrastructure. Developing infrastructure and business environment. And business environment. Next paragraph. In financial year 20, in financial year 2020, 100% FDI, 100% FDI was permitted for sale of 100% FDI was permitted for sale of coal and coal mining activities. For sale of coal and coal mining activities. Coal mining activities. Next point.
ठीक है, उसको पॉइंट वाइज करते जाना। वो नेक्स्ट, टू कर्व अपॉर्चुनिटीज, टू कर्व और टू रिड्यूस opportunistic takeover, opportunistic takeover या acquisition, opportunistic takeover of Indian companies, of Indian companies due to COVID-19 pandemic, due to COVID-19 pandemic, the government amended FDI policy, the government amended FDI policy according to which an entity of a country, according to which an entity of a country which shares a land border with India, entity of a country which shares a land border with India, land border with India, or where the beneficial owner of investment, or where the beneficial owner of investment into India is situation, or where the beneficial owner of investment into India is situated, where the beneficial owner of investment into India is situated, can invest only under government route, can invest only under government route, can invest only under government route, मतलब वो ऑटोमेटिक रूट से नहीं होगा, इट विल बी डन थ्रू गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट में अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होता, तो इट मे रिजल्ट इनटू हॉस्टाइल टेक ओवर आल्सो। थर्ड, टू सिंप्लीफाई the approval process, to simplify the approval process, to simplify the approval process of foreign investment, to simplify the approval process of foreign investment, and to promote ease of doing business, and to promote ease of doing business, and to promote ease of doing business, comma, the earlier FIPB, Foreign Investment Promotion Board, earlier FIPB was abolished in 2017. FIPB was abolished in 2017, and a new regime has been put in place, and a new regime has been put in place. Earlier it used to be through that FIPB route, Foreign Investment Promotion Board route, and a new regime has been put in place. Under the new regime, the process of, under the new regime, the process for granting FDI approval, under the new regime, the process for granting FDI approval has been simplified, Next, a revamped portal, Foreign Investment Facilitation Portal, FIA portal, a revamped portal, Foreign Investment Facilitation Portal, Foreign Investment Facilitation Portal has been launched. Foreign Investment Facilitation Portal has been launched as the online single point
interface of the government of India, online single point interface of government of India, to facilitate foreign direct investment, to facilitate foreign direct investment, to facilitate foreign direct investment. मतलब जो सिंगल विंडो स्कीम है, इन द सेंस अर्लियर इट यूज्ड टू बी दैट whenever the foreign investment will come, before making that investment you have to take clearances for various departments, so you have to go to various departments. But in the single window scheme, what will happen? You are going only to one window, and that window will be basically the FIF portal, and through that FIF portal you will be getting all the clearances. So it is basically a ease of doing business in the Indian economy. तो सर्टेन मेजर्स ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक्सटर्नल सेक्टर वाले क्वेश्चन में लिखो, एफडीआई वाले पार्ट में या इंडस्ट्री के अंदर लिखे। ये क्वेश्चन तो टेक्निकली एफडीआई पॉलिसी विल बी एज अ पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल सेक्टर, तो वहाँ वाले टॉपिक के अंदर उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन ब्रीफली टॉक्स अबाउट द मेजर्स से थी एमएसएमई, एमएसएमई की हेडिंग अलग समझिएगा। बट लास्ट सर्वे के अंदर जैसे आपने क्लास के अंदर भी एक्सप्लेन कर रखा है कि जो इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए, लाइक ओल्ड डेफिनेशन है, न्यू डेफिनेशन है, तो वो न्यू डेफिनेशन ऑलरेडी जो चेंज इन द डेफिनेशन है वो पार्ट लास्ट वाले सर्वे के अंदर एक्सप्लेन्ड है, और क्लास के अंदर भी वो आपने डेफिनेशन लिख रखा है। उस पॉइंट को इस सर्वे ने रिपीट नहीं किया, सिर्फ मेंशन कर रखा है दैट देयर इज अ चेंज इन द डेफिनेशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे फैक्ट में रखेंगे। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमई इन द ओवरऑल ग्रॉस वैल्यू rose from 29.3 in the financial year 18 to 30.5 in the financial year 20, and the economic impact of pandemic caused the sector share to fall to 26 points, so it is fluctuating. The share was 29.3 in 18, went to 30.5 in 20, that is pre-COVID period. After COVID period in 2021 it reduced to 26.8, and the MSME contribution to manufacturing sector marginally fell to 36% in financial year 21. जो पहला इंफॉर्मेशन है वो इन टर्म्स ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड और दूसरा इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। ठीक है, याद रहेगा। एमएसएमई का शेयर एक्सपोर्ट के लिए, मतलब अगर आपसे एमएसएमई का इंपॉर्टेंस पूछा जाए, जैसे आई थिंक 17 में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द एमएसएमई सेक्टर फॉर द इंडियन इकोनॉमी। So how we can explain the importance of any sector for economy? Its contribution in GDP, its contribution in the employment, its contribution in the export, ये तो तीन important factor है, but when you are answering that question, तो how you will substantiate it? Substantiate करने के लिए आपको fact चाहिए, data चाहिए। It is contributing this much in the growth, it is contributing this much in the export, it is contributing this much in the employment. So for that purpose you supplemented with the economic survey, because economic survey gives you that data, उस डेटा को आपको यूज करना है बेसिकली वहां। तो फैक्ट पैराग्राफ के फॉर्म में बोल रहा हूँ, उसको लिख लेना। एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूशन, एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूशन, एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल ग्रॉस वैल्यू एडेड, to overall gross value added, to overall gross value added increased from 29.3% in 29.3% in financial year 18, 29.3% in financial year 18 to 30.5 in financial year 20, 30.5 in financial year 20, and due to pandemic its share reduced to 26.2%, 26.2% in financial year 21, in financial year 21. Full stop.
the contribution of this sector in manufacturing, the contribution of this sector, that is MSME, the contribution of this sector in MSME, the contribution of this sector in manufacturing, the contribution of this sector in manufacturing also reduced marginally to 36% in financial year 21, to 36% in financial year 21, in financial year 21. The lower growth has also resulted into declining share in exports from MSME, declining share in exports from MSME. Next paragraph. Government of India has taken multiple steps. Government of India has taken multiple steps through the Atmanirbhar Bharat package, to reduce the economic impact of pandemic on MSME. To reduce the economic impact of pandemic on MSME. To reduce the economic impact of pandemic on MSME. तो जो मल्टीपल स्टेप्स है उसको आप पॉइंट में लिख लो. यहाँ पैराग्राफ में गिवन है, जस्ट राइट इन पॉइंट्स. नंबर 1, modification of definition of MSME. Modification of definition of MSME. मतलब जो पहले डेफिनेशन होता था इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, उसको आप टर्नओवर के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया. सेकेंड, प्रोविजन ऑफ 20,000 crore subordinate debt, 20,000 crore subordinate debt for stressed MSME, Third, 50,000 crore equity infusion, 50,000 crore equity infusion through Self-Reliant India Fund. 50,000 crore equity infusion. 50,000 crore equity infusion through Self-Reliant India Fund. Next, launching of Udyam portal for MSME registration. Launching of Udyam portal for MSME registration, ठीक है. And that portal is basically involves paperless zero cost registration portal that is based upon self declaration and only require the Aadhaar registration. So it is basically helping in ease of doing business, you can say. Next, waiving of global tender requirement, for procurement of up to 200 crore, for procurement of up to 200 crore. Next,
गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑफ समाधान पोर्टल. नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑफ समाधान पोर्टल. गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑफ समाधान पोर्टल. अब इस तरीके के टर्म्स और जो फीचर्स स्पेसिफिक है वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होने चाहिए. द गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑफ समाधान पोर्टल सेटअप अंडर MSME Development Act, MSME Development Act, set up under MSME Development Act to monitor the outstanding dues, of MSME sector, in resolving their cash inflow difficulty. तो आप सर्वे से बेसिकली वो पॉइंट को पिक कर लेंगे. तो पॉइंट बेसिकली आपने लिख दिया समाधान पोर्टल उसका, बट उसमें कितने एप्लीकेंट हुए, कितने अप्रूव हो गए, वो इन्फॉर्मेशन देना अब आपका काम नहीं है. ठीक है, बट वो पॉइंट आपके आंसर में आएगा. बिकॉज वी आर आंसरिंग बेसिकली इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी चेंजेस. तो उस पॉलिसी की वजह से अब इट से दैट इट रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 1.3 लाख एप्लीकेंट ऑफ विच 16.8% हैज बीन डिस्पोज एंड सो ऑन. तो दैट इन्फॉर्मेशन यू कैन इग्नोर. मतलब जब आप, बिकॉज अल्टीमेटली वहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट है, वर्ड कंस्ट्रेंट है, टाइम कंस्ट्रेंट है. तो आपको अपने आंसर में पॉइंट्स लाने हैं. तो पॉइंट्स लाते समय आपने उसमें उद्यम पोर्टल मेंशन किया, समाधान पोर्टल मेंशन किया है, बट उस पोर्टल के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन नहीं करना, या उसने कितने एप्लीकेंट है वो एक्सप्लेन नहीं करना. नेक्स्ट पॉइंट, the single window grievance redressal portal, the single window grievance redressal portal, the single window grievance redressal portal, single window grievance redressal portal, that is champions. Single window grievance redressal portal for MSME, that is champions, launched by Ministry of MSME, in June 2020. Next point, government has also initiated raising and accelerating MSME performance scheme. Raising and accelerating MSME scheme. Raising and accelerating MSME performance scheme. Raising and accelerating MSME performance scheme. RAM. Raising and accelerating MSME performance scheme, RAM, in financial year 23. The government has also initiated raising and accelerating MSME performance scheme in 2023. The World Bank supported scheme aims at, this is scheme RAM, the World Bank supported scheme aims at, World Bank supported scheme aims at strengthening institutions and governance, strengthening institutions and governance, strengthening institutions and governance at the center and state, at the center and state, at the center and state. ठीक है, तो एक्चुअल में क्या किया आपने, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है इसको पॉइंट के फॉर्म में लिख लो, वो याद रहेगा कि व्हाट मेजर्स हैज बीन टेकन
by the government of India in the recent year to cushion the economic impact of COVID-19 pandemic on MSME sector. तो MSME sector के ऊपर जो economic fallout है उसको कम करने के लिए what measures has been taken by the government. So these were the measures taken by the government to deal with the MSME sector. Specifics को ignore करिए, like electronic sector, automobile sector. टेक्सटाइल सेक्टर, ये सेक्टर वाइज डिस्क्रिप्शन है फिर. एंड द अदर पॉइंट विल बी, यू कैन इग्नोर दिस आल्सो. इंडस्ट्री 4.2, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट. मेक इन इंडिया 2.0 एंड द इंडस्ट्री 4.0. ठीक है, मेक इन इंडिया 2.0 इज बेसिकली रेफरिंग टू व्हाट? तो स्पेसिफिक, जब स्पेसिफिक आ जाता है तो उसके अंदर आपको यार क्या, फोकसिंग ऑन द 27 सेक्टर इंक्लूडिंग 15 मैन्युफैक्चरिंग एंड 12 सर्विस सेक्टर है. अमंग देम 24 सब सेक्टर हैज बीन चूजन व्हाइल कीपिंग इन माइंड द इंडियन इंडस्ट्री स्ट्रेंथ एंड द कॉम्पिटिटिव एज. सो इट टॉक्स अबाउट दोज 24 सब सेक्टर जिसपे फोकस होगा इन दी मेक इन इंडिया 2.0. So it has identified in fact 27 sectors, out of which 15 in the manufacturing and 12 in the service sector. ठीक है, heading up बनाओगे मेक इन इंडिया 2.0 and the production linked incentive scheme, PLI scheme. To promote India's integration in global value chain, to promote India's integration in global value chain, to promote India's integration in global value chain, Make in India 2.0 is now focusing on, Make in India 2.0 is now focusing on, Make in India 2.0 is now focusing on 27 sectors, 27 sectors which include 15 manufacturing sector, 15 manufacturing sector and 12 service sector, and 12 service sector. So out of these 27 sector, 24 subsector has been chosen. 24 subsector has been chosen. 24 subsector has been chosen while keeping in mind the Indian industry's strength, while keeping in mind the Indian industry's strength and competitive edge, while keeping in mind the Indian industry's strength and competitive edge, comma, the need for import substitution, मतलब कहाँ हमारा कॉम्पिटिटिव एज है वो भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है वो भी इंपॉर्टेंट है. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कॉमा, द पोटेंशियल फॉर एक्सपोर्ट एंड increased employability. And that means you are choosing those 24 subsector in order to, जो सेक्टर हम चूज करेंगे उसमें what will be the guiding factor? The guiding factor will be that
इन विच सेक्टर यू हैव द स्ट्रेंथ, दैट मीन्स कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज कहाँ है हमारा। दूसरा, किस सेक्टर में इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है, और किस सेक्टर में एम्प्लॉयबिलिटी ज़्यादा है। सो जिस सेक्टर में एम्प्लॉयबिलिटी ज़्यादा है उस पर फोकस ज़्यादा होगा। सो यू आर चूजिंग दोज 24 सेक्टर अकॉर्डिंग टू दैट। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस वो 24 सब सेक्टर बेसिकली आपने मेंशन कर रखा है, ये उसका लिस्ट है इनफैक्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ में, इन परस्यूट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ, in pursuit of the objective of or following the objective of Make in India program, Make in India program, and with a vision of, and with a vision to achieve, and with a vision to achieve Atmanirbhar Bharat, with a vision to achieve Atmanirbhar Bharat, government launched production linked incentive scheme, production linked incentive scheme, PLI, production linked incentive scheme. The scheme is expected to attract, the scheme is expected to attract a capital expenditure of approximately 3 lakh crore, capital expenditure of approximately 3 lakh crore over the next 5 years, over the next 5 years. So it has the potential to generate employment for, it has the potential to generate employment for over 60 lakh in India, over 60 lakh in India, and increase the share of manufacturing sector, and increase the share of manufacturing sector in total capital formation, in total capital formation, increase in the share of manufacturing sector in total capital formation. So the PLI scheme, the PLI scheme is aimed to make Indian manufacturers, the PLI scheme is aimed to make Indian manufacturers globally competitive, comma, attract investment in areas of core competency, attract investment in the areas of core competency and cutting edge technology, core competency and cutting edge technology, comma, ensures efficiency, comma, create economies of scale, and make India an integral part of, global value chain, make India an integral part of global value chain. These type of paragraph are very important. जो PLI scheme है, it is basically aimed to make Indian manufacturers globally competitive, attract investment in areas of core competency and cutting edge technology, ensure efficiency, create economies of scale, and make in India an integral part of the global value chain. So if you are able to write these
कंप्लीट का कंप्लीट सेंटेंस अगर आपने लिख दिया तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव, बिकॉज सारे पॉइंट्स बेसिकली उस सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं. Then it also refers to about one more point is for industry 4.0. ठीक है, कंक्लूजन के फॉर्मेट में इनफैक्ट लास्ट में. इंडस्ट्री 4.0 एक्चुअल में क्या रेफर करता है? इट इज बेसिकली मोर एंड मोर ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करने की बात करता है. इट टॉक्स अबाउट मोर एंड मोर ऑटोमेशन ऑफ द फॉर्म एंड इन्वॉल्विंग मोर एंड मोर टेक्नोलॉजी इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस. सो इंडस्ट्री 4.0 लिख लेना. ये टॉपिक जब आप वो डॉक्यूमेंट अगर आप रेफर करते हो नीति आयोग का इंडिया 75, तो उसके अंदर भी काफ़ी एक कंप्लीट चैप्टर गिवन है इंडस्ट्री 4.0 का. मतलब काइंड ऑफ वी कैन से द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, that means involving the more and more technology into the production process. And on the advent of fourth industrial revolution, or industry 4.0 aims to integrate new technology like cloud computing, machine learning and artificial intelligence into manufacturing process, and thereby leading to efficiency across value chain. So while the adoption of these technologies is underway, adoption of these technologies in Indian manufacturing is underway, after comma, large scale adoption is yet to happen. However, an enabling environment is rapidly developing. The push towards self-reliance in semiconductor technology and production, will help India to create another pillar of this revolution. The government of India realizes the importance of industry 4.0,
and a few initiatives by government has been undertaken like Samarth, that is Smart Advanced Manufacturing Rapid Transformation Hub. Samarth Smart Advanced Manufacturing Rapid Transformation Hub. Under the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprise, under the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprise, under the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprise, उद्योग भारत 4.0 aims to encourage technological solution to Indian manufacturing. Aims to encourage technological solution to Indian manufacturing unit. Yes, so these were the points explain. जैसे आप किसी आंसर के फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक सर्विस में जो इनिशियल वाला पार्ट होता है जो जस्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन में होता है, वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, लाइक जस्ट राइट ऑन स्मार्ट सिटी मिशन, वो क्वेश्चन आ गया। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर आप सिर्फ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेक इन इंडिया 2.0, अब वो 2 आ गया तो अब मेक इन इंडिया के बारे में तो आप जान रहे हो, 2.0 बेसिकली यहाँ पे स्पेसिफिक हो जाएगा। तो हार्डली यू हैव टू राइट देयर फ्यू पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ, तो वहाँ पे वो एग्जैक्टनेस मैटर करता है। वैसे इंडस्ट्री 4.0 के बारे में रिलेवेंस अगर हो गया, या जो ओवरऑल एफडीआई पॉलिसी है उसके बारे में रिलेवेंस है, तो सर्वे को बेसिकली आपको उस फॉर्मेट में यूज़ करना है। दिस 33 पेज का जो कंटेंट है इसके अंदर, इसको आपने बेसिकली अब नोटबुक में लिखा हुआ तो ये 4-5 पेज के अंदर बेसिकली आ गया। तो 33 पेज को बेसिकली 4-5, बट जो लिखा हुआ है वो आपके लिए रेलिवेंट है, उसको आपको रीड करना बार बार, वो पैराग्राफ सेंटेंस याद हो, जो पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे बाय राइटिंग द आंसर, डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखते समय, ठीक है। तो नाउ वी हैव कवर्ड इन फैक्ट 6 चैप्टर, ठीक है। स्टेट ऑफ इकोनॉमी होगी, मीडियम टर्म जो स्टडी थी वो एक्सप्लेन कर लिया। देन वी हैव एक्सप्लेन्ड पब्लिक फाइनेंस, वी हैव एक्सप्लेन एग्रीकल्चर, सर्विसेज एंड इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट में एक क्लास बेसिकली इसमें वी कैन कवर दिस एक्सटर्नल सेक्टर, जो मेजर टॉपिक है उसमें एक एक्सटर्नल सेक्टर वाइज डिस्क्रिप्शन में ये वाला पार्ट ऐड कर सकते हैं। रिमेनिंग ऑल दो चैप्टर जो सर्वे है वो वॉल्यूमिनस है, इनफैक्ट 12 चैप्टर है टोटल, बट जो स्मॉलर चैप्टर है उसका आप हैंड आउट से मतलब रिटन वर्क से भी वर्क हो जाएगा, मतलब जो मेजर पॉइंट्स है वो आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, जो मेजर पैराग्राफ होगा या सेंटेंस होगा वो सेपरेट करके। बट अंडरस्टैंडिंग के व्यू से एक चैप्टर और इम्पॉर्टेंट है विच विल बी एक्सटर्नल। सो एक क्लास बेसिकली एक्सटर्नल की होगी, और टाइम होगा तो उसके अलावा उसमें और ऐड कर सकते हैं, बट दिस विल बी योर लास्ट। रिमेनिंग का जो पार्ट होगा वो आपको रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये होता है कि सर्वे को जब आप पढ़ रहे हैं तो सर्वे से जितने भी सेक्टर वाइज आपने एनालिसिस कर रखी है ऑप्शन में, एग्रीकल्चर पढ़ा है उसको आपने इम्प्रूव किया कंटेंट वाइज, इंडस्ट्री को किया, सर्विस को किया, पब्लिक फाइनेंस वाले पार्ट को किया, और ओवरऑल जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी है वो सिनॉप्सिस था पूरे सर्वे का, ठीक है। तो विल बी टेकिंग वन मोर फॉर द एक्सटर्नल सेक्टर, इसके बाद हो जाएगा, ठीक है। ये टेंटेटिवली कल तो नहीं, मंडे ट्यूसडे हो जाएगा, कवर कर लेंगे, मंडे या ट्यूसडे वो लास्ट क्लास हो जाएगी।
ठीक है, तो आई थिंक 5th लेक्चर था ये, तो एक क्लास और 6 लेक्चर तक ठीक है।